Hello students. So next part amar female reproductive system रहुची vagina. So vagina रा structure देखिबा जोरा हम previously already draw कर सरचे. So this is your vagina. It is around 7 to 10 centimeter long. So length टा होची 7 to 10 centimeter long and it is a fibromuscular cylindrical tube like the cylinder भलिया. It is a fibromuscular long cylindrical tube and this vagina has an opening. जो opening इटा को कहा जाउची vaginal opening or vaginal orifice. So the opening of vagina is called as vaginal opening or vaginal orifice. Next, this opening, the vaginal opening is covered by a membrane and that membrane is called as your hymen. And the pH of vagina averages around 4.5. pH of vagina averages around 4.5 and it is lined by non-keratinized squamous stratified epithelium. तो इरा को epithelial tissue द्वारा form हिची और को epithelial tissue रे vagina line हिची, that is non-keratinized squamous stratified epithelium. एंड इंटरनली जदि हम स्ट्रक्चर देखिबा भीतर आड़े तो एठी हमरो स्ट्रक्चर भीतर आड़े रफ है कि प्रेजेंट अछि. इट इज नॉट प्लेन, इट इज हैविंग स्मॉल यू कैन से इरेगुलर स्ट्रक्चर और इट इज लाइंड इरेगुलरली इंटरनली. तो से जो भीतर जो इंटरनल लाइनिंग रफ स्ट्रक्चर अछि ताको कहवा जाउची वेजाइनल रग. So see here, so this is the fold of the inner part in the vagina and this is called as your vaginal rug. Next देखिबा functions of vagina. First function होची intercourse. So vagina साहाଯ୍य रे penis और vagina होची जागा जोठी की penis enter करची आउ semen और sperm release करची. Next, transport of sperm. When the semen is released in the vagina, then it is transported from the vagina towards the uterus. So vagina ru uterus upward direction रे move करची. By the help of vagina, sperm moves from vagina towards uterus. Next, menstruation कोन? Third function होची menstruation. So vagina तमरो ट्यूब भलिया एक्ट करची जो साहाଯ୍य रे कि जा साहाଯ୍य रे कि हमरो menstrual flow बाहर को रिलीज होची. By this menstrual flow comes out. Next, childbirth. The muscles or the tissues which are present, they will expand. Vaginal muscles, they will expand जा साहाଯ୍य रे कि childbirth हबारे easy होची. So next we will see external genitalia और जाको हमें कहूचे vulva. So this is the female external genitalia or vulva. तो here I have labeled all the part of the female external genitalia. तो सबुठु first रे anterior portion रे कौन प्रेजेंट अछि monopubis. Okay, so monopubis कोन? It is a fleshy and fatty area. So this area is it consists of fleshy and fats. Okay, so flesh and fat. So it is a fleshy and fatty area containing pubic hair. Tiny hair like structures are present here, that is called as your pubic hair. These are called as your pubic hair and this entire region is called as your monopubis. Next, second structure देखिबा, that is clitoris. So posterior to monopubis, एटा monopubis posterior side रे present अछि a structure, this small structure, this is called as clitoris. Okay, so this clitoris is covered by, so एटा suppose clitoris ता ऊपर गुटे covering अछि और गुटे membrane cover करिकि रखिछि ताको कहा जाउछि prepuce and this prepuce is homologous to that of penis of males. Next, clitoris contains different erectile tissue. जेमति मेल मानकर पेनिस रे हम देखिबा erectile tissues present अछि. कोन कोन अछि? Corpora cavernosa and corpus spongiosum. In female we have corpora cavernosa. And difference कोन? सेठी मेल रे थिला हमर corpora cavernosa, corpus spongiosum. फीमेल रे हमर अछि corpora cavernosa जाई रे कि यूरेथ्रा नाही
मेल रे यूरेथ्रा प्रेजेंट अछि इन corpora sorry cavernosa, but in female in corpora cavernosa no urethra is present or urethral opening is not there. next part होची हमरो labia majora. So see, this is your labia majora. ए जो fold अछि तापरे this is called as your labia majora. labia रो meaning होची lip, majora means large or big. So बड़ ओठ भाया और लिप भाया जो स्ट्रक्चर अच्छे बड़टा ताकू कह जाउची लेबिया मेजोरा. एंड तापर नेक्स्ट आ गोटे मस्कुलर फोल्ड अच्छी देखो सान स्ट्रक्चर. सो दिस इज कॉल्ड इज लेबिया माइनोरा. स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज लेबिया माइनोरा. लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इज लेबिया मेजोरा. तो लेबिया माइनोरा रे कौन प्रेजेंट अच्छी? इट इज ए फ्लेशी फोल्ड ऑफ स्किन विच फॉर्म्स द बाउंड्री एंड प्रोटेक्ट्स द वल्वा. सो ये बाउंड्री भाया और आउटर मोस्ट लेयर जो हम कहीपर दिस इज द लेबिया मेजोरा एंड प्रोटेक्ट्स द वल्वा. नेक्स्ट लेबिया मेजोरा रे हमर प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट थाउची, आउ स्वेट ग्लैंड्स थाउची, आउ सिबासियस ग्लैंड्स जाको प्रेजेंट थाउची. सिबासियस ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. सो इन लेबिया मेजोरा रीजन वी विल फाइंड स्वेट ग्लैंड्स and sebaceous gland, that is oil producing glands. Next, so this labia majora is homologous to scrotum of males. Similar structure male ro compare करिले, so it is homologous to scrotum of male. Next देखिबा हमें labia minora. So this inner fold आफ्टर लेबिया मेजोरा तले और लेबिया मेजोरा परे जो फोल्ड प्रेजेंट अच्छी स्मॉल फोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. एंड लेबिया माइनोरा भितरे जो पोर्शन अच्छी या को कहा जाउछ हमरो वेस्टिब्यूल. दिस सेक्शन which is embedded by your labia minora. So this inner section is called is your vestibule. तो ए पोर्शन को कहा जाउछि वेस्टिब्यूल, जा चारियाडे की हमरो लेबिया माइनोरा सराउंड करिछि. Posterior portion of your labia minora. So the posterior portion of your labia minora is fused. Here it mix he jaiji, fuse he jaiji to form forchate. So the labia minora is fused posteriorly to form forchate. And labia minora also contains sebaceous gland or oil glands. Next, last part of your external genitalia is perineum. Okay, so this is your perineum, just present above the anus. So perineum kono, it is the area which extends from forchate to the anus. So the area from forchate to anus, एठरू एनएस जाए. तो ये जो एरिया अच्छी ताकू कहा जाउछि तमरो पेरिनियम. इज इट क्लियर एवरीवन? फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज योर forchate and this is your anus. So this area is called as your perineum.